That whenever you're taking a step in life, wherever, beginning or middle or end, to be or not to be is the question. Because if you do not have a practical usage of what you've learned, be it on education or learned in life, if you haven't done it practically, then you really haven't learned anything at the exact time. Exactly. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपके साथ अमन अहमद। हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद है, हिज नेम इज फौजान रफी। ही इज कोऑर्डिनेटर एकेडमिक अफेयर एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। Yes, yes, fine. आज हम आपसे पूछेंगे आपके लाइफ जर्नी के बारे में। हमें बताएं लाइक अपना मतलब इंट्रोडक्शन देना, सेंस लाइक आपकी इनिशियल एजुकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम? Okay. I was born in Pakistan, in Lahore. I believe it was Ganga Ram Hospital. ओह Moved नाइस। from there to Saudi Arabia at I think about the age of 33 days or so. Grew up there, being educated in the American system in Saudi Arabia, and eventually then the Saudis don't allow foreigners to stay for a certain age, so we moved to USA ओके and grew up and did my middle school and high school from USA. Then I independently came back to Pakistan alone, left my family there to join Pakistan Navy. ओके Then नाइस। सो I- योर फैमिली वो स्टिल अभी वहीं पर है और सिर्फ आप मूव किया? No, they had to come back to Pakistan. ओके, अभी मतलब आप सारे यहाँ पर ही हैं। Alhamdulillah. जी. ओके नाइस। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने नेवी में कितना अरसा सर्व किया? It's been 8 to 10 years in अच्छा। service. And और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नेवी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Alhamdulillah, you can say it was the best of years, it was the worst of years. Both of them. लाइक वर्स्ट के सेंस में कहा और बेस्ट के सेंस में कहा? Best in the actual achievement, the feeling of what I've done. ओके। And worst is when you want to do something and you think you can, but unfortunately you couldn't. You couldn't. Okay. So that would be the worst. In this sense it is like worst. Okay. अच्छा, बहरिया में आप हैं, लाइक आपको बहरिया में एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? लाइक आपको बहरिया में 5 years हो गए हैं, Alhamdulillah. so how it is going? It's been beneficial, it's been educational as well. Okay. It depended on time, based on how I deal with the students and the response I get back from them. It assists me in understanding how things can be mattered outside the university domain itself. So it's been Okay. good, alhamdulillah. It's going good. अच्छा, हमें बताएं कि स्टूडेंट एकेडमिक अफेयर्स लाइक ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? As the coordinator academic affairs, what I deal with is everything that's related to your academia. For example, something to do with your education, which degree you're doing, what are the prerequisites, what are the requirements Okay. to graduate, and then the requirements by university based on the requirements by HEC. So I assist students to understand that and to fulfill it in due time and then successfully have a Okay, so this is your job over here. जी. Right. Okay, मुझे बताएं लाइक आप पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और आपने बाकी सारा अरसा लाइक वहां पर लाइक जी. बाहर थे फॉरेन कंट्री में। Right. सो व्हाट इज द डिफरेंस? आपने कहाँ पे ज्यादा एंजॉय किया? आप लाइक पाकिस्तान में आके इसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा था कि वहां पे रहना वो एक अच्छा डिसीजन था अगर वहां रहता? कोई रिग्रेट तो नहीं है इस तरह के यार आई शुडंट मूव टू पाकिस्तान? Alhamdulillah, I have no regrets. ओके, यू आर हैप्पी हियर। Alhamdulillah, I'm very happy here. सो आपका वहां पर टाइम कैसे गुजरा? It was excellent. इट वाज गुड। Yeah. सो व्हाट वाज द रीजन? आपने बताया ना कि मेरी फैमिली ने मूव की, मैं Right. मूव किया, तो कोई ऐसी चीज थी? वो नेवी का एक शौक था कि नेवी ज्वाइन करनी है? I can tell you two things. ओके। When I was in high school in the United States, मतलब FSC के आखिरी 2 years, unfortunately September 11 happened in New York and the Twin Towers and the whole terrorist namology of Muslims. And the way they treated me, I took it to offense. And I decided that ठीक है, आया हूँ, रहा हूँ, educated हूँ, नाउ इट इज द but टाइम do I टू really need या to be an American? हाँ And then I realized I'm not. हाँ I'm perfectly fine being who I am. So I did come back to Pakistan. Oh, by the way, September 11 had already occurred.
and they asked me to join us. Nice. And I said, what are you going to do? Send me to Afghanistan? They said, yes. Okay. I said, thank you. Hmm. So I decided then I'd rather protect my country Hmm. than protect somebody else's. That हाँ, was it is my better. reason. Exactly. अच्छा, नेवी में लाइक आपका जब आपने स्टार्ट किया, हाउ वाज योर ट्रेनिंग? स्ट्रिक्ट होती है उनकी ट्रेनिंग, कैसी होती है? हमें जरा बताएं, हम जानना चाहते हैं। मतलब कि जब आप एंटर होते हैं, और अभी देखिए पाकिस्तान में जब आप रहते हैं ना, आपको ये कुछ स्ट्रिक्टनेस की मुझे लगता है आदत होती है, या बाहर तो बड़ा एक सॉफ्ट सा एनवायरनमेंट होता है, उधर से आना और फिर नेवी ज्वाइन करना, वहाँ ट्रेनिंग आई थिंक सख्त होती है, तो वो हमने आराम से कर लिया। Whatever answer I would have for that, that has varied for everybody from 1947 till today. हर एक डिफरेंस है, different eras, different treatment or different methods used for training. Okay. It was tough, yes, it was quite tough, and the only reason why it was tough was ये नहीं कि खूनी हो रहे हैं and things like that, कोई तकलीफ हो रही है. No. Again, like I said, my family was there and I was here alone. सारे मेरे So you fellows, survived over here alone. exactly, जो मेरे course mates हैं, they got the opportunity to make a call at home once every Okay. week. So they could talk to their family. Yeah, I could not. you would know. I couldn't call them at. अच्छा, ये चीज तो बहुत सख्त है, ज्यादा फील होती है कि मतलब आप अपनी फैमिली को भी नहीं कांटेक्ट कर पा रहे। Yeah. ये चीज तो आई थिंक आपको ज्यादा पिंच किया होगा, बाकी तो चीजें Pretty आपने much. कर ही ली होंगी उनके साथ अलहमदुलिल्लाह। गुजारा, पर दिस इज समथिंग टफ। Yeah, it was. ओके, अच्छा बताएं आपकी अपनी नेचर के बारे में बताएं, लाइक किस तरह के हैं? अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को साइड पे कर दिया जाए तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट आर योर लाइक्स? You could take it in a negative way, you could take it in a positive way, but my answer would be I'm a very aggressive person. एग्रेसिव पर्सन, लाइक व्हाई, इन विच सेंस? लाइक वैसे भी आपको गुस्सा आता रहता है? नहीं, not in गुस्सा. See, this is what I'm saying. Not in गुस्सा. हाँ, आता होगा. Allah is the better judge. But if I have something to do, be it my own requirement or be it those who I'm working for or working with, etc., whatever the situation is, if there's something I have to do, then I'll be very aggressive on it कि ये करनी है, जो मर्जी हो जाए ये करनी है. मतलब जो ठान लेते हैं बस वो ठान लेते हैं। Exactly. That अच्छा, is, दिस इज समथिंग पॉजिटिव, ये तो बहुत अच्छी बात है। but like you said, पर अगर गुस्सा, हाँ, इसमें right? गुस्सा नहीं So आना I said चाहिए। there's two perspectives. to it. पर्सपेक्टिव, The way I एग्जैक्टली, play it, alhamdulillah, so far it's been good. इट्स गुड। That is the same theology I use while sitting in my office. If a student comes up to me and says something is bothering them or there's something that's being a hurdle, if by any book of law and our university rules allows me or allows that student to get a better way out of it, then I will provide that. दैट्स my रियली job. नाइस। और बड़ा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड कर दें। अच्छा, मुझे बताइए, जो आपका ये है कोऑर्डिनेटर अफेयर्स, जी। स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, ये बच्चों को ग्रूम करने में किस हद तक एक रोल प्ले कर रहा है? मतलब कितना स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? Okay. Let's say this is very beneficial to the students because if you do not have a practical usage of what you've learned, be it on education or learned in life, if you haven't done it practically, then you really haven't learned anything. at that Exactly. time, right? Practical learning is very important Exactly. along with your theory. So we have interns which are part-time. They are our own students coming in, putting in time, learning what we do and how it's supposed to be done. That creates interaction, that creates team building, that creates co-working. Then we have events such as the community service program, the CSP program. Yes. They go outside and help those that need it, and they work there as a group together. They organize it themselves. This is something compulsory. इसके बगैर आपको डिग्री It नहीं is a मिलती। compulsory for those that are doing bachelors, right? Okay, yeah. But people still partake in it even after their Because it is a requirement good done. thing. Yes, one Exactly. should do it. The way I express it to the students that come up to me is, you think it's CSP, community service program, just consider it sadqa jariya. सबका जाए। Follow that. Yes. Just follow that, and it is comfortable. I've done it myself when I've been a Okay. student here. It's been Yeah. very relaxing and comfortable, obviously. No, it's a good thing. One So should do when, it. if we can build or guideline them and give them a structure of their character that they should enhance on, then alhamdulillah they'll be successful. That's our purpose. Nice. अच्छा, यहाँ पर आप इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? जी alhamdulillah I do. I stay with Okay. my mom and dad. Do you have any regrets in your life? Like कभी लगा आपको कि ये हो जाता और ये नहीं हुआ मेरे साथ? You mean like I said कि
अमेरिका से नहीं आना चाहिए था. Regrets. If I see it that way, then I would say I did have a regret. I applied for Pakistan Air Force Okay. when I came to Pakistan. I always wanted to be a pilot, and I didn't have the glasses. Yeah, exactly. Didn't have them. I was Yes. perfect 6x6. They said you have a sinus problem. You'll never get to fly. Yes. That is the. This was something which It was the literally biggest pinch big. I got. Oh. Otherwise, everything else I've done, alhamdulillah, I'm happy with. हाँ. So that was about it. That The regret part would be that, but it's a natural thing, so I can't do much more. आपकी लाइफ में देखें अभी तक लाइक आपने नेवी किया और ये इतना अच्छी लाइफ गुजर रही है. कोई इंस्पिरेशन है मतलब जहन में कि किसी को देख के ये मेरा रोल मॉडल है, इसके पीछे इसको मैंने फॉलो किया और आज जहाँ पर मैं हूँ मतलब उनको सोच कर हूँ. कोई ऐसी इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि जिसने आपको बहुत हेल्प किया हो अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, किसको आप फॉलो करते हैं? काफी ज्यादा है, but primarily I can explain it this way. I have my mother and father, mashallah se. माशाल्लाह माशाल्लाह. Other than that, obviously, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best person to look on to as an example, that would be him. Other than that, in realistic time, I have met a couple of people that have been through quite a lot of pain and struggle, maybe more than me. But I still see them standing and happy and smiling. So, whatever I have developed on the better side of my life would be from those people. That's really nice and great. That's really nice. अच्छा, अब मैं आपके साथ एक सेगमेंट करूंगी, ठीक है, जिस पे चूज वन होगा. I am gonna give you two options. उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? Done. Okay. Private sector और public sector? Public sector. Public sector. Okay. निहारी और पाए? Nihari. निहारी. Nice. Okay. Sea or mountains? Sea. See. Okay, one thing. आपको क्या पसंद? Are you like a morning person या आपको होता है कि मैं आराम से लेट उठूं और मैं enjoy करूं? What kind of a person you are? ये question miss हो गया. ये मैंने पूछना था. You said that you have served, right? So you do understand I've served, right? Yes. और उसकी वजह से. 24/7. There's no time. There's It's all oh yes. Now I got your point. Bollywood or Hollywood? time. Hollywood. Okay. शलवार कमीज या धोती कुर्ता? Shalwar kameez. अच्छा, मुझे लगा आप बोलेंगे इन दोनों में से कोई भी नहीं. आई लाइक जीन्स शर्ट, आई लाइक ड्रेस पैंट एंड शर्ट्स. मुझे ऐसे लगा. पर you I've like never worn shalwar kameez before I came to Pakistan. आप जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए फिर आपने शलवार कमीज पहना है. समझा क्या है क्या? हाँ. अभी अच्छा, वहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं कभी पहना था? Why? हाँ, वहाँ है ही एग्जैक्टली नहीं, बनाने वाला भी कोई नहीं. कोई बनाने वाला नहीं. और सब एग्जैक्टली. अच्छा, अब आपको पसंद है? I have a couple enough हाँ. to dress up for. ओके. अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ एज अ स्टूडेंट और एम्प्लॉय? Both. I've done Both. both. या नहीं, किसका आपका एक्सपीरियंस अच्छा गया? मतलब एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ आपको कैसी लगती है और एज अ एम्प्लॉय व्हाट डू यू थिंक? As a student, it was difficult as a student because, as you can see, I'm old, and I had to join after the whole time spent in the hospital. So backlogging thing, it was tough. The reason why it was tough was because I would be hitting back on myself. Okay, why don't you know this? You know, it's a beat on yourself thing. But as an employee, alhamdulillah, it's excellent. It's excellent. That's nice. अगर आप satisfied हैं, satisfy होना बहुत important है. Yep. हमारी ना दुनिया में I think this is the issue, लोग satisfy नहीं है. मतलब उनको इतनी blessings मिली हैं but they don't realize it. गिनती नहीं की उन्होंने. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी, आपने उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? डिस्क्राइब इन, जो वर्ड आपको बताऊंगी उससे आपने वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है, राइट? ओके. या अभी वो तो आपको पता चलेगा कैसे हैं. दे आर रियली इजी. यूथ, वन वर्ड में बताएं. व्हाट कम्स टू योर माइंड? सॉरी. फ्रेश. यूथ, फ्रेश. ओके. पाकिस्तानी यूथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं को जहन में रख के फ्रेश का. स्पाइसी. नाइस. जिंदगी. A test. A test. True. Okay, smartphones. Smartphone would be. Spoiler. No. It would. I would say I call it distraction. Distraction. True. 90s music. Depth. That. आपको पसंद है?
Pretty much yes. Yes, or still अभी आपको like अभी I still देखे ना, have them. yeah, I you have still those listen tracks, them. CDs, cassettes. अच्छा, all. वो उस वक्त का जो म्यूजिक था ना, वो बड़ा ही रिलैक्सिंग और सूदिंग था. आजकल का म्यूजिक देखे रैपिंग है, वो चीज नहीं रही. Generations change, na? Yeah, exactly. But because I'm from that time, I'll stick to that. Or I'll merge both whenever required. Okay. Food, Or food. Home. home. अच्छा, are you foodie? Yeah. Pretty much. Okay. What kind of food you like? Like ये पाकिस्तानी food या कौन किस? I eat anything. I eat anything. As long as it's halal. As long as halal. Okay. Beria University. A journey in itself. A journey in itself. Nice. अच्छा, end पर आप हमारे viewers को कोई message देना चाहें? I think I don't know which book is from or what on, but I do know it's said by Shakespeare. Just consider that whenever you're taking a step in life, wherever, beginning or middle or end, to be or not to be is the question. You have to decide what you do. Exactly. You have It's to a do. big detailed explanation for it, but just consider it. Whoever wrote it, remember who's looking after you, who's watching you. बिल्कुल. Simple. Thank you so much for Pleasure is coming और हमें अपना टाइम देने के लिए थैंक यू. Thank you. हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पर होता है खत्म. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा. नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.